ill effect or negative thoughts we have on our consciousness, it is all eliminated, or it get all cleanses. Okay, very good. Thank you. Anyone else would like to try and explain this? What does it mean? कोई प्रयास करेंगे समझाने का, इसको क्या मतलब है इसका? निधि माता ने समझाया, but anyone would like to add something? Prabhuji, Yes, can Mata. I Yeah, add yeah, one more? yeah. Prabhuji, our consciousness is not only present, whatever we are thinking, whatever deeds we have in this life, our consciousness is not containing only things from this life only, but from many, many lives. So when we chant, so whenever we chant our holy name, so whatever deeds, whatever sin, whatever negative thoughts we have from all the lives and this life, including this life, it all get cleanses, because whatever deeds we have done in our previous life, our karmas and our thoughts get attracted to that particular way of thinking and that particular way of behaving. So whenever we chant, we are more towards Krishna consciousness. Even if we have done anything wrong in our past, even if we were materialistic or anything else like that. So whenever we chant, we are more towards spiritualistic thing. So Okay. this is what. Thank you. Thank you, Mata. Anyone else? Yes, try out. Sunil Ladda Prabhu. प्रभु जी, आई फील के व्हेन वी चैंट तो हमारा कॉन्शियसनेस इतना एलिवेट हो जाता है कि हमें खुद को दिखने लगता है कि हमारी क्या गड़बड़ है, और वो अपने आप एज वी चैंट ऑन तो इट गेट्स प्यूरिफाइड. Very good. Thank you very much. And yes, Dr. Shas Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, here, Prabhu, Srila Prabhupada giving an analogy of mirror and dust. Just like when we see the clear mirror, he is comparing the clear mirror to the clear Krishna consciousness which we inherit in ourselves. And the dust is the materialistic things and all the other bad things which has, which is preventing the our Krishna consciousness to come with the full swing. So when we chant, it is giving, he is giving the analogy of chanting like when we clean it with water, the mirror is clean, and we can actually see and visualize the consciousness. In the same way, when we chant, our love towards Krishna and the devotion towards Krishna, which is naturally there, the natural position of the soul is exposed by chanting. Very nice. Thank you. Anyone else? आप अपना वीडियो ऑन रखिए कृपया. Please keep your video on. Little difficult for me to connect otherwise. Thank you, Mukul Prabhu. Thank you, Krishna Prabhu. प्रफुल्ल प्रभु आप भी ऑन कर लीजिए. दया माता जी. So, as you can see in this, mirror is being cleansed with Hare Krishna Mahamantra. Okay? As Dr. Vishwas Prabhu said, we are Krishna conscious by design. Everybody is a Krishna devotee by design. You just need to surface it. Just need to invoke it. If the mirror is dirty, we cannot see. Like we cannot see our face. If mirror is dirty, it has to be cleansed to see your face. Similarly, Krishna is always there, but we can't see. Like sun is always there. Sometimes there are clouds,
Because of clouds, we cannot see Krishna. The moment clouds are removed, you can see sun, you can see Krishna, right? Now, we have lived millions of lifetimes. Millions of lifetimes we've already lived. Trying to do what? Trying to enjoy materially. So our consciousness has become extremely material. My consciousness has been clouded by the dust of materialism. Our consciousness has been clouded with the dust of materialism. Now, to see the sun or to see Krishna, this dust has to be removed. There is no material process to remove dust. Okay? And the only spiritual process to remove this dust, especially in this current age of Kali Yuga, is through the process of chanting. People who have been chanting for some time, they all must have experienced, realized what they can see their own shortcomings. They can see what are the problems we have. Right? They can see the presence of Krishna in the holy name. May not be full extent, but some little realization. Yes, there is Krishna in the holy name. So if we chant constantly with full faith, and today is the subject matter of faith only, आज का जो वर्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, it is primarily based on our determination, our resolution, our faith in this process of Krishna consciousness. ठीक है? So one who chants with faith, his mirror will get cleansed faster. और जैसे जैसे आप देखिए मिरर साफ होता है, आपको झलक दिखाई देनी शुरू हो जाती है. You can see your picture slightly. And when you see picture slightly, your confidence in the process of cleaning goes up. Isn't it? हाँ, काम कर रहा है सफाई, कुछ कुछ दिखाई देने लगा है ना? जैसे थोड़ी झलक दिखाई देती है तो आपका विश्वास बढ़ जाता है, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. अच्छा, वो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, इसलिए जितना गंभीरता से, जितना विश्वास से हम जब करेंगे, ये झलक उतनी जल्दी नजर आएगी, और जितनी जल्दी झलक नजर आएगी उतना हमारा विश्वास इसके ऊपर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो शुरू में जब हम शुरू करते हैं दिस जर्नी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट इज बिल्ट ऑन फेथ. बिल्ट ऑन फेथ, श्रद्धा. ठीक है, एंड ग्रेजुअली दिस श्रद्धा बिकम्स निष्ठा. निष्ठा मीन स्ट्रॉन्ग फेथ. धीरे धीरे हमारा जो श्रद्धा है वो और बढ़ती है, उसका स्तर बढ़ने लगता है, जिसको हम निष्ठा कहते हैं. निष्ठा मतलब निष्ठा के स्तर पर आकर व्यक्ति इस पग से डगमगाएगा नहीं. He will remain fixed on this path. ठीक है, so we have to reach that stage as soon as possible so that we are in position to continue this journey always. नहीं तो छोटी छोटी कठिनाइयां हमारे जीवन में आएंगी, वो हमको डगमगा देंगी इस रास्ते पे. ठीक है, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? सो इन द बिगिनिंग chant with faith. Gradually this faith will convert into conviction and निष्ठा. ओके, तो एक माला जप करेंगे. अपना माला निकालिए सब. Try to keep your video on, please. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shri Vasudeva Gaura Bhakta Hare Krishna. श्वास पर जो माला पे नहीं कर रहे थे You should chant in the beats. प्रभु जी माला नहीं है अभी मेरे पास. कहाँ पर हो? यस मैं घर पे ही हूँ. ऊपर है. मैं आता तो मिस हो जाता हूँ राउंड में. मैं कर लूंगा एक एक्स्ट्रा आज का. Chanting along with everyone. पल्लवी माता जी कहाँ है? अल्पना माता जी. Call both of them. हरे कृष्ण. आवाज नहीं आ रही प्रफुल्ल प्रभु जी आपकी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ जी प्रभु जी. कहाँ है माता जी? कहाँ है? आज जो भीलवाड़ा आए हुए थे तो अंदर ही है अभी. अच्छा अटेंड नहीं कर पा रही है आज. अच्छा भीलवाड़ा में. हाँ ठीक. हरे कृष्णा पल्लवी माता जी. ओके. लेक्चर के साथ जप नहीं करना है. ओके. अभी खत्म होने वाला तो फिनिश कर लो उसको. ओके. तो in the last class we discussed this very important verse. कौन सा था? 2 point. Which verse? 2 point. Prabhuji 2.39 and 40. 239 and 40. Okay. Yes. 40 verse was Neha abhikramanashuvasti pratyavayu na vidyate sualpam apiyasya dharmasya trayate महतो भयात. किसी को याद है इसका क्या सार था? What was the essence of this verse? Very very important verse. कोई बताना चाहेंगे? Yes, दया माता जी. अनम्यूट कीजिए. अनम्यूट नहीं हो रहा है? यस. हाँ यस. इसका सारांश तो ये था कि स्वल्प कम ईश्वर का नाम मात्र प्रभु के श्री कृष्ण भावनामृत
का हम स्वल्प यानी बहुत कम मात्रा में भी अगर हम उसका ध्यान करते हैं, हम उसके निमित्त होकर के कार्य करते हैं, तो उसका फल स्थायी रूप से हमें प्राप्त होता है या जमा होता रहता है। भले वह इस जन्म में न मिले तो भी अगले जन्म में या और कहीं भी वो मिलता रहता है। लेकिन अगर हम भौतिक इंद्रिय सुख की कामना करते हुए प्राप्त करते हैं, तो उसका हमें उस भौतिक कार्यों में जो हम लगे रहते हैं, तो उसको पूर्ण करने पर ही हमें उसका प्रतिफल प्राप्त होता है, जो कि अस्थायी होता है, वो नष्ट भी हो जाता है। लेकिन ईश्वर, जैसे आपने उसका अजामिल का उदाहरण दिया था कि अजामिल ने अंतिम समय में अनायास ही अपने पुत्र का, नारायण का नाम स्मरण करना किया, उसके परिणाम स्वरूप उसे गोलोक में ईश्वर के धाम में उससे स्थान मिला। तो ईश्वर के अल्प मात्र स्मरण से, उनकी भावना से युक्त होने पर ही उसका फल हमेशा बना रहता है और स्थायी रहता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। Anyone else would like to say something on this verse? बोलेंगे तो आपको फिर ज्यादा याद रहेगा, स्मरण रहेगा। Never leave opportunity to Hare speak. Krishna, Prabhuji. I'll tell. Yes, Mataji, please go ahead. Prabhuji, in this verse, he had to Lord Krishna says that from in any janma, if you are doing my puja, and even if the little, थोड़ा सा भी अगर आपने किया है, तो उसका फल जो है आपको मिलेगा। और अगर आप नेक्स्ट जन्म लेते हो, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, और जितना आपने कैरी किया है वहीं से आगे आप जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो पीछे वाला रहेगा। Very good. और जो मटीरियलिस्टिक गेन्स हैं, वो यहाँ पर इसी जन्म में इसी के साथ हमने खत्म कर देने हैं। सपोज आई वर्क फॉर सम, मैंने एमए किया या मैंने पीएचडी की, तो वो मेरा इसी जन्म में इसी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने माला की है 16 और मैं नेक्स्ट जन्म में अगर उसको जाती हूँ, तो मुझे ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ मुझे जो है वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, जहाँ मैं हरि स्मरण जो है वो अच्छे से कर सकूं और अपनी पूजा को जो है वो आगे ले जाऊं, और तब तक ले जाऊं जब तक कि मैं उनके साथ जो है वैकुंठ लोक में नहीं पहुंच जाती। That was it. Very nice, very nice. Thank you, Mataji. Anyone else would like to say something? बहुत अच्छा। I just want to get assurance कि समझ आ रहा है क्योंकि अध्यात्म का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सूक्ष्म है, इट इज लिटिल सटल है। जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाए, समझ आ गया, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। I just want to be confident that everybody has understood, and these verses are very very important. विनीता माता जी, आपको कुछ याद है? कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रयास कीजिए, कुछ भी याद हो, एक लाइन भी। कुछ बोलेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप बोलिए, कुछ भी बोलिए। यस मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बस वही है, हमें कि अच्छे से चैंट करना चाहिए एकाग्र होकर, और यदि हम ये फॉलो करते हैं इसी को कंटिन्यूस, तो अंतिम समय में हमारे कृष्ण हमारे पास रहते हैं। बहुत अच्छा है, हम अंत समय पे भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और गीता में कहते हैं क्या, यम यम वापी स्मरण भावम, जैसा जैसा स्मरण होता है वैसी गति मिलती है हमको, है कि नहीं? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये गति शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहेंगे कि हमको ये जो नेचर है, ये प्रकृति है, किसी भी शरीर में फेंक दे, किसी भी जानवर के शरीर में या किसी पक्षी के या पशु के शरीर में फेंक दे। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम कितना प्रयास करते हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का एडमिशन जो है आईआईटी में हो, आईआईएम में हो, है कि नहीं? और बच्चों को बोलते हैं खूब मेहनत करो, अभी से मेहनत करो। तो ये भी एक शरीर के अंदर एडमिशन की तरह है। हमको कैसे शरीर में एडमिशन चाहिए? आध्यात्मिक शरीर में एडमिशन चाहिए, भौतिक शरीर में चाहिए। भौतिक शरीर में भी कौन सा शरीर? पशु पक्षी का शरीर,
या फिर मनुष्य का शरीर। तो ये गति शब्द साधारण नहीं है, और इसके लिए थोड़ी मेहनत करना अत्यंत आवश्यक, करनी भी चाहिए। जैसे एक बच्चा आईआईटी के लिए कोटा में 3-4 साल रह के मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है आप सबको पता है ना। वैसा दृढ़ निश्चय चाहिए हमको भक्ति में। और वही श्लोक अगला है 41 नंबर, व्यवसायत्मिक बुद्धि, किस तरह का दृढ़ निश्चय चाहिए भक्ति के अंदर है, इसकी हम चर्चा करेंगे। निधि माता, यू वांटेड टू से समथिंग? यस। प्रभु जी, लास्ट क्लास में हमने होली नेम का एक और सिग्निफिकेंट देखा था कि हम जब whenever we chant, even if jokingly, sarcastically, in whatever manner we chant, it saves us from all the sinful reaction. We get rid of all the sinful reactions. हाँ देखिए, That's the कृष्णा इज power of holy name. so merciful and so flexible है। सांकेत्यम परिहास्यम वा, वो श्लोक हमने किया था भागवतम से। कैसे भी भगवान का नाम ले लो, लेकिन लो है, कैसे भी लो लेकिन लो, छोड़ो नहीं इसको बीच में है। चाहे जितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन लो, क्योंकि उसके जो फायदे हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमारी कल्पना से परे हैं। अजाब मैंने सोचा नहीं था कि खाली नारायण बोलने से है उसके जीवन को एक सही दिशा मिल जाएगी और अंत में उसको भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं सोचा था उसने है। इसलिए किसी भी स्थिति में भगवान के नाम का आश्रय नहीं छोड़ना है। वी शुड नेवर लीव द शेल्टर ऑफ द होली नेम इन एनी सिचुएशन, however difficult it may be, but don't leave chanting process. Okay, thank you. Prabhuji, I have a question, Prabhuji. Yes, Mataji. प्रभुजी, आज सुबह में मैं वो YouTube चैनल पर जो रामायण के गौरांग प्रभु जी है ना, वो कह रहे थे, तो उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि है ना, भगवान जो है वो अपने भक्तों के विरह को सहन नहीं कर पाते हैं, भले ही भक्त जो है उनको भूल जाएं। तो वो मुझे क्लियर नहीं हुआ प्रभु जी। लाइक कोई मान लो किसी का कोई बेटा छोड़ के चला जाए, घर छोड़ के चला जाए, तो क्या माँ बाप उस बेटे के विरह को सहन कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये बहुत प्रेम है उनके साथ, है कि नहीं? भगवान गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? मामेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातना। ये सारे जीव, केवल मनुष्य नहीं, सब जीव, 84 लाख योनियां, ये सब मेरे अंश हैं, मेरे पुत्र हैं। अहम बीजा पदा पिता, मैं उनको बीज देने वाला पिता हूं, ऐसे गीता में बोलते हैं। जैसे एक साधारण माँ बाप अपने बच्चों के विरह को सहन नहीं कर सकते, बच्चा आंखों से थोड़ा ओझल हो जाए, आप मार्केट में गए मान लो, 2 मिनट के लिए बच्चा इधर से उधर हो जाए, आपकी क्या हालत होती है? 2 मिनट, और बच्चा घर छोड़ के चला जाए तो उसकी तो फिर उसका विरह का स्तर तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो भगवान उस विरह को महसूस करते हैं, इसलिए इतनी योजना बनाते हैं हम सबको वापस लाने के लिए। कितनी योजनाएं बनाते हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, 10 स्टेप्स में सृष्टि बनी है। भगवान ने कितनी योजना बनाई है कि ऐसे जो बद्ध जीव हैं, जो जिन्होंने विरोध करके चले गए हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। हैं भक्त दिए, गीता दी, भागवतम दिया, प्रसाद दिया, क्या क्या मंदिर दिए, क्या क्या नहीं दी, क्या क्या व्यवस्था नहीं की भगवान ने। भक्त आपके पीछे पड़े रहते हैं, है कि नहीं? किसकी व्यवस्था है ये? आपने जप किया कि नहीं किया प्रभु जी? है बताइए, ये भगवान की व्यवस्था है ना। किसकी व्यवस्था है ये? किसके भले के लिए आपको फोन आते हैं?
किसके भले के लिए? मुझे बताइए, किसकी व्यवस्था है ये? भगवान की व्यवस्था है ना। तो कृष्णा इज ऑलवेज प्लानिंग ऑल द टाइम हाउ टू गेट दिस लिविंग एंटिटी बैक, बट वी हैव बीन ट्राइंग टू शर्क हिज हैंड. नहीं चलना मुझे अभी, आई डोंट वांट टू गो. दिस इज वी, आवर प्रॉब्लम, नॉट हिज प्रॉब्लम. ही इज ऑलवेज रेडी. कहते हैं आप एक कदम लो, भगवान 10 कदम लेते हैं आपकी तरफ. But we have to make the beginning. We have to show our genuine interest to go with him. येन यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथै भजाम्यहम्. शुरुआत हमको करनी है. हमारे गंभीरता के अनुसार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं. हमेशा याद रखना, यदि हम भगवान को हम दिखाएंगे कि हम गंभीर हैं, तो कृष्णा विल रेसिप्रोकेट फॉर श्योर. एंड व्हेन कृष्णा रेसिप्रोकेट्स, हमारा विश्वास कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है. तो आपने देखा था रास्ते में एक वीडियो दिखाया था आपको, एक माता जी का है, जो खाई में गिर गई थी. याद है आपको? है, हालांकि वो भगवान विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस क्षण के बाद उनका विश्वास ऐसे बढ़ा कि उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया भगवान. है कि नहीं? So we have to make the beginning. We have to show Krishna that I am genuinely interested. Krishna, I am genuinely interested. Please help me. Then Krishna is there to help us. Okay? लेकिन उस तरह किस तरह का डिटर्मिनेशन चाहिए, किस तरह की बुद्धि चाहिए, उसकी चर्चा अब आज करेंगे. हैं, कौन से भक्त हैं जिनको सफलता प्राप्त होती है आध्यात्मिक जीवन में, ये आज चर्चा का विषय है. किन भक्तों को आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण सफलता, सफल तो सारे ही हैं, जैसे हमने पिछले श्लोक पढ़ा, कुछ भी कर लो उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जल्दी होनी चाहिए जाने की. है कि नहीं? Why suffer in this material world for a long time? We should be in a hurry to go. Okay, so उसकी चर्चा हम आज करेंगे. Okay. एक मिनट, मैं इसको मिनिमाइज कैसे करूं? हाँ, ओके. सो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? ओके. तो पिछली क्लास का सार ये था, there is no gain in material endeavors, however perfect they are, it's only a loss. भौतिक प्रयासों में कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें नुकसान ही नुकसान. There is no loss in spiritual endeavors, however imperfect they are. आध्यात्मिक प्रयास कितने ही, क्या बोलते हैं उसको, इम्परफेक्ट हो, फिर भी उसमें केवल फायदा ही फायदा है. इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है. फिर हमने चर्चा की थी किस तरह से भौतिक प्रयास केवल एक डॉट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी नेगेटिवली. देखिए, आध्यात्मिक प्रयास इस डॉट के साथ साथ आने वाले कई जीवन, कई लाइफ टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो पॉजिटिवली. दैट इज गारंटीड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दिस लाइफ and lives to come. And material endeavors, negative impact on this life and lives to come. It's only negative impact. Okay. So today's subject matter is what kind of people are successful in devotional life. ठीक है, ये आज का हमारा श्लोक है. निकालिए 41 नंबर वर्स नंबर 41. मैं बोलूंगा, आप पीछे पीछे दोहराइएगा. दो यू आर म्यूटेड बट यू कैन रिसाइट, डोंट हैव टू अनम्यूट. ओके. व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, बहुशाखा हि अनंतश्च
बुधयो अव्यवसायिनाम। व्यवसायत्मिका बुद्धि। लड्डा परिवार पूरा बैठा है ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ सबको। एवरीबडी इज देयर नो? लड्डा फैमिली? ओके ओके ओके। राधिका माता जी कहाँ है? राधिका माता जी, चित्रा माता जी, देयर एब्सकॉन्डिंग। चित्रा माता जी हैं, थैंक यू माता जी। सामने बैठो ना, आई कैन सी। चित्रा, राधिका माता जी कहाँ है? नहीं है आज? I can't hear. She's not here, is it? Sorry. Okay, I'll check later. ठीक है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसाय आत्मिका मतलब रिजोल्यूट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब फुल्ली डिटर्मिन्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, eka only one, iha in this word, Kuru Nandana, O beloved child of Kuru, yani ke Arjuna, Bahu, then and Shakaha, having various branches. He indeed Anantaha, unlimited, Cha also Buddhaya, intelligence, A Vyavasayinam, of those who are not in Krishna consciousness. The translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. ठीक है, फिर से पढ़ता हूं। थोड़ा सा समझने में कठिन है इसको, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको आराम से। Those who are on this path, which path? On the path of devotion. ठीक है, जो भक्ति के मार्ग पे हैं, they are resolute in purpose. They are fully determined. What kind of determination? One pointed intelligence. eke hi kurunandana. One pointed. जैसे आपको ध्यान होगा, अर्जुन ने जब लगाया था वो मछली की आंख में तीर, है कि नहीं? वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, नजर केवल उस आंख के ऊपर थी और कहीं आंख कोई नजर नहीं थी। दिस इज वन पॉइंटेड अटेंशन, वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस। एक ही करुनंदना, एंड देयर एम इज वन। उनके जीवन का उद्देश्य एक है। जीवन का उद्देश्य एक है। ध्यान सुनिए मुकुल प्रभु जी, सब लोग बी अटेंटिव। पार्थ उधर खेलेगा, डिस्टर्ब नहीं करने का। ओके, है वन हु इज ऑन दिस पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, देयर एम इज वन। एम इज ओनली वन। दे आर फुल्ली डिटर्मिन्ड ऑन दिस पाथ। आगे बोलते हैं, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इररेजोल्यूट, जिनका डिटर्मिनेशन ढीला ढाला है, जो इस पाथ पे ढीले ढाले हैं, देयर इंटेलिजेंस इज मल्टी ब्रांच्ड। उनके जीवन में कई उद्देश्य हैं। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये अलग अलग उद्देश्य है ना। हमारे जीवन में होते हैं ना, कई उद्देश्य होते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, और उन उद्देश्यों के पीछे हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस पथ के ऊपर हैं, उनके जीवन का उद्देश्य केवल एक है। Their intelligence is one pointed in one direction, not multi-branched. जैसे आप मुझे बताइए
कि आपने सुना है मल्टीटास्किंग है? मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है सुनील प्रभु? व्हाट इज मल्टीटास्किंग? बहुत सारे काम एक साथ करना। आप एक काम अच्छे से करें या बहुत सारे काम एक साथ करें, किसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं? विद फोकस। विद फोकस एक ही काम अच्छा हो सकता है। मान लो आपने देखा होगा बचपन में हम लोग एक वो लेंस लेके कागज के ऊपर रखते थे, है ना, और ऊपर से लाइट आके वो कागज जला देती थी, है कि नहीं? यदि हम स्टेबल हैं तब कागज जलेगा, यदि हम हिलते डुलते रहेंगे तो आप कितना ही देर लेके खड़े रहो, कुछ होने वाला नहीं, है ना? दिस इज कॉल्ड फोकस, अटेंशन, वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, एकाग्रता। इस तरह की बुद्धि चाहिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए। ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रगति करते हैं, who are fully determined। लेकिन डिटर्मिनेशन आएगा कैसे, ये महत्वपूर्ण है ना। हाउ विल डिटर्मिनेशन कम? सो लेट्स रीड पर्पट टू श्रील प्रभुपाद एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? चित्रा माता या पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। प्रभु जी हिंदी में या इंग्लिश में? कैसे ही पढ़िए, कोई पढ़िए, कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है वो पढ़िए। A strong faith and personal consciousness, one will be elevated to the highest perfection. आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही माता जी। एको चल रहा है क्या वहां पर? स्पीकर ऑन। हाँ उसको बंद कर दीजिए, एको आता नहीं। आराम से पढ़िएगा, हैं? पढ़िए। A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called व्यवसायत्मिका intelligence. The Chaitanya Charitamrita states, Shraddha sabde vishwasa kahe subhardha निष्काया Krishna bhakti kale sarva karma karta haya. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligations to family, traditions, humanity, or nationality. Fruitive activities are the engagements of one's reaction from past good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, when one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good or bad. And the highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. The result purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. Vasudeva Sarvam iti sa Mahatma Sudurlabha. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes.
by watering the roots of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's action, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practiced under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of the students and who can guide him to act in Krishna consciousness. As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act formally and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows. Yashya Parasadat Bhagavat Prasado Yashya Parasada Na Gati Kutopi Dhyan Stuvams Tasya Yasastri Sandhyam Vande Guru Shri Charanavindam. By satisfaction of the spiritual master, the supreme personality of Godhead becomes satisfied. And by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisances unto him by a spiritual master. The whole process, however, depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body, not theoretically but practically. Longer a chance for sense gratification manifested in fruitive activities. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. हो गया. थैंक यू वेरी मच माता जी. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं इस पर्पट के अंदर. एनीवन वुड लाइक टू हाईलाइट सम ऑफ देम? एनीवन कैन स्टार्ट. यस चित्रा माता जी, आप बताइए. वन पॉइंट लेट एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट. प्रभु जी, इसमें आप जो एक पॉइंट है वो यह है कि आपको आपके जो बोना फाइड स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको फॉलो करना है बिल्कुल एकदम वन पॉइंट पे. डोंट पुट योर स्ट्रेटजी, जस्ट फॉलो हिम जैसा वर्ड टू वर्ड वो गाइड करते वैसे. एक्चुअली आप एसेंस पे आ गई है. अंत में बताना था मुझे, आपने पहले ही बता दिया. वेरी गुड. किसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका बनती है? One who follows his spiritual master's instructions as it is, without dilution, with sincerity. Krishna awards him that Vyasayatmika Buddhi with which he can have one-pointed intelligence in Krishna consciousness. How do you know Krishna is happy or not? कैसे पता लगेगा आपको? Whether his representative, who is spiritual master, he is happy or not. Simple. And when will he be happy? When you follow his instructions. When you follow his instructions. As it is. Sincerely. So if you're able to please your spiritual master, means you're able to please Krishna. And if Krishna is pleased, Dadami Buddhi Yogam Tam. Krishna will give us this one-pointed attention to make quick progress on this path. Okay? And I have experienced anyone who sticks to the instructions received, he will make progress very fast. One who is not serious following instructions, his progress is limited. He is also making progress, some progress, but limited. But if one displeases Krishna, displeases his spiritual master, then Krishna is displeased. ये एक श्लोक बताया यहाँ पर.
Sakshad Haritvena Samast Shastre. Sorry. Yasya Prasadat Bhagavat Prasado Yasya Prasada Nagati Kutopi. If you're able to please Guru, Krishna is happy. But if you are displeasing Guru, then Nagati Kutopi, then very difficult. Very difficult to make spiritual progress. Okay. So the quick, formula to make progress in spiritual life is you should note down what are the instructions coming and then make them your life and soul. That is the formula. Follow them religiously, sincerely. That will please Krishna. You may not be successful, but still your sincere endeavor will please Krishna. Your sincere endeavor will please Krishna. Okay. Anyone else? Any other point? Prabhuji, I'll tell. Yes. Prabhuji, in this, there is this last point. The whole process, however, depends on the perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body. Here in the morning today, I was hearing through that example, I'll explain, Prabhuji, that our body is compared to a boat. And the process, the life process is compared to a river. The river is the emotional disbalance which is created, and God has given us the body like a boat, and he is telling that through this body reach unto me. Unlike we who stick to the fruit of the material gains and we move towards the sea. So here the whole conception of the body, not theoretically, but we need to understand this practically. Theoretically, we already know that we are souls, but to feel it completely is another thing. And then when we are totally away from this sense gratification, when we move ourselves away from the sense gratification, then those activities are completely achieved, and we are not having any other thing in our mind. There is only one pointed concentration, that we have to be completely Krishna consciousness in it. Yes, very. So one And point. Yes, Mataji. Sorry, I muted you. Unmute yourself. Prabhuji, this is what I have experienced in my personal life. Like if I'm chanting nicely, then I am able to focus on all my works very nicely. Means after I have finished my work chanting, and even if I'm working, then the focus and everything, there is a clarity in it. But if I don't chant sometime, like something happens, I'm sick or I'm unable to chant, then my focus is also a bit disrupted. I'm not able to do that very nicely. So our intelligence becomes multi-branched. Yes, Prabhuji. Ji. Okay, very good. Now, Mata is explaining that we should know that we are not this body, we are soul. But knowing is not sufficient. We have to experience it. We have to realize it. And how do you realize? By serving. Because that is our eternal occupation of service to Krishna. The moment you situate yourself in the service of Krishna means you come back to your original position of being a servant of Krishna. Then you can experience yourself as a soul, not as a body. So practically you have to serve Krishna. Practically make bhoga for Krishna, clean the altar, put water, many ways. You can change your deity's dress, make garlands for your deities. Simple, practical service you do, then you see, you can feel you're on the platform of soul, not on the platform body. Devotional life is not inactive. One can become lazy and don't do anything and say, I'm only chanting, I'm only reading Bhagavad Gita. No, you have to put all your senses in the service of Krishna. Your mind, your intelligence, your
hands, your legs, your smelling sense, everything has to be put in the service of Krishna. Then you are situated on the platform of soul, not on the platform of body. You can experience the real bliss, Satchit Anand, which is the nature of the soul. Okay, very good. Any other point? Thank you. Mamta Mataji. Shivani Mataji, are you there? Hare Krishna. जी श्री कृष्ण प्रभु जी। आप सुन रहे हैं ना सब कुछ? जी जी प्रभु जी। क्या सुना आपने, बताइए। हैं? थोड़ी देर के लिए उठी थी, मेरे बेटे की तबीयत खराब है ना, तो उसको देखने के लिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब कर, कोई बात नहीं, सुनिए फिर। बीच में सुन रही। Just focus on listening. Okay, no problem. Okay. Anyone else like to say something? Yes, Siddharth Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. There is one example given, like just by watering the roots of the tree, all the branches of the tree gets water. So if we want to serve our family, friends, and society, country, and if just by doing it in like Krishna consciousness, that is the best form of serving everyone in the society or country or your family. Very good. How do we understand this? By serving Krishna, we serve the entire society, entire family. Yeah, whatever we do, we should do it like keeping Krishna in mind. So our main aim should be to serve Krishna. So whatever we do, we should do it with Krishna consciousness. That is true. The point I'm asking is, you just mentioned by serving Krishna, we serve everyone around us. How do you explain this? When we serve Krishna, we are performing the highest level of service to everyone around us. Who can explain this? Please raise your hand and then, otherwise, okay. Yes, Larsulila Prabhu. Yeah, Prabhuji, when the consciousness is elevated, so हमको we don't see different bodies, but we see all the souls which are all part of the same Krishna. Very good, very good. Ruko. Very good. What does it mean? Means you naturally develop compassion for every living entity. Not only your family members, anyone, not only human beings, even an ant, you will be compassionate to. Even an ant, you will become compassionate. This is a natural development of quality of compassion in devotees. They don't want to harm anyone. They don't, because they see everyone as a part and parcel of Krishna. They don't want to harm. In Srimad Bhagavatam, Krishna says, if someone is serving me, serving my deity, but he is not able to see me in every living entity, then his deity worship is useless. He's saying what? You are serving me and you're killing ants, you're killing animals, then deity worship is useless. Koi fayda nahi hai uska. Because you're not able to see my presence in the ant, you're not able to see my presence in other animals, other human beings. Deity worship has no meaning. Okay? So when you become a nice devotee, then you are able to develop compassion for everyone. And compassion is what is required in the society, isn't it? Second point, who was raising hand? Krishna Prabhu, you wanted to say something. Thank you, Sunil Prabhu. Krishna Prabhu. Yeah, what I wanted to say, Prabhuji, was by developing
bhakti, by developing dedication to Bhagavan Krishna, the quality of compassion, the quality of quality of service to the entire world, that comes naturally because of the strong faith in Krishna Bhagavan. Okay, very good. Secondly, when you become devotee, you attract other people around you to get attracted to Krishna, isn't it? If people see you, you're so happy being in Krishna consciousness, you're always chanting, always happy, always dancing, always eating prasadam, then other people also get attracted simply by looking at you, isn't it? So you influence so many other souls to go closer to Krishna. This is the highest form of service, Krishna says in Bhagavad Gita. Okay. Anyone else? Prabhuji, I have a small doubt here, Prabhuji. In the first paragraph, faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with the obligation to the family traditions, humanity, or nationality. Means we should be practicing Krishna consciousness irrespective of family traditions, humanity, or nationality. No, I'll come to that matter. Even the whole paragraph, the further also I did not understand till this state of automatically achieved by the progressive Krishna. I'll come to that matter. Okay, let's go one by one. Okay? Yes, Prabhuji. Okay, let's start with the basics. Everyone is searching for pleasure, yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Our scriptures say, what you have been searching so hard everywhere, in your profession, in your relationships, in different variety of eatings, right? Different sense objects, you will not get it. You will not get it. Or you will get it to the extent of what? Suppose you are in a desert with high temperature and you're feeling very thirsty. You're feeling very thirsty and somebody comes and gives you one drop of water. How much? Will that give you pleasure? Will that give you pleasure? One drop of water, you're feeling very thirsty. So you get one drop of water, you again feel thirsty. Isn't it? Then you try something else, you get one drop of water. You get that water, you again feel thirsty. So this is the nature of material pleasure. You will get one drop, again feel thirsty, again try, again get one drop of water, again feel thirsty. Your search for pleasure will end only in Krishna consciousness. Your search for constant pleasure. Both are compared like, pleasure of material sense gratification is like a drop, and pleasure derived in Krishna consciousness is like an ocean. No comparison between a drop and an ocean. Ocean can quench your thirst. A drop cannot quench your thirst. Isn't it? Ocean can quench your thirst, not a drop of water. Okay? In Srimad Bhagavatam, it suggests how do you get full satisfaction? Yayatma suprasidati. What will completely satisfy you? Can someone read this? Nidhi Mataji, can you please read this translation? Prabhuji, sir, translation padna. Only translation. The supreme occupation, dharma, for all humanity is that
by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. So this is the formula for complete satisfaction in life. Formula for complete. Don't search anywhere else, you will not get it. Stop searching it, you will not get it. Yeah, your search for happiness, for pleasure, for complete satisfaction will end only in this. Okay, what? Loving service to Lord Shri Krishna with two conditions. पल्लवी माता जी ध्यान दीजिए, with two conditions. What conditions? First condition is ahetuki, without any expectation, on the platform of love, because love does not have any condition. You give me this, then I'll serve you. No conditions whatsoever. Krishna can keep us in any situation, but we have to still serve him. That is what he's expecting. Second, uninterrupted. Uninterrupted means it should be on in all situations. ऐसा नहीं कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और हमने छोड़ दिया. Uninterrupted, apratihata, continuous. If you serve Krishna in these two ways, unconditionally, uninterruptedly, then one can satisfy oneself completely. You will derive the highest level of pleasure simply by serving Krishna in this way. Why? Materially, what is the nature of material happiness is in Bhagavad Gita 5.22. Okay, मुकुल प्रभु जी आप पढ़िए इसको, नीचे पढ़िए ट्रांसलेशन. अनम्यूट कीजिए पहले. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures having a beginning and end, and so the wise man does not delight in them. ये बताया गया है कि जो समझदार व्यक्ति है वो भौतिक भोगों में सुख ढूंढने का प्रयास नहीं करता है. An intelligent person does not try to search happiness in material endeavors. Why? उनका स्वभाव क्या है? They have a beginning and an end. आदि अंतवंत कोंतया, वो शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, है ना. यही स्वभाव है. नई कार लिया, उसका थोड़ा सा सुख आना शुरू हुआ, एक दो हफ्ते के अंदर खत्म हो गया. नई ड्रेस लिया, आज डाला, दूध तीसरी बार डाला, उसका आनंद खत्म हो गया. लेकिन एक रसगुल्ला खाया, आनंद आया, दूसरा खाया, आनंद आया, तीसरा खाया, पेट खराब हो गया, है ना. ये स्वभाव है. सो इसलिए योर सर्च फॉर हैप्पीनेस will continue forever if you are searching for happiness in material endeavors. Please make note of this seriously. We have been searching only pleasure, nothing else. कुछ भी हम करते हैं हमको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है, मिलता नहीं और मिलेगा भी नहीं. भगवत गीता का संदेश है, you never get it. इसे कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या लिखा है यहाँ पर? ना तेषु रमते बुद्धहा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समय बर्बाद नहीं करता इन चीजों में. A wise man does not delight in them. He is not wasting his time searching for happiness in material endeavors. आप देखिए हम दिन भर कितना मेहनत करते हैं, क्या मिलता है अंत में हमारे को? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, isn't it? सुनाई दे रहा है? Are you able to hear what I'm saying? Are you able to hear? Audible? सुनाई दे रहा है ना? Okay. So material endeavors में हम बहुत मेहनत करेंगे, अंत में केवल हमको फ्रस्ट्रेशन मिलता है, दुख मिलता है, क्योंकि स्वभाव है
भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधनों का, हे स्वभाव। But Yatma Suprasidhati, only serving Krishna can fully satisfy you. So find ways how you want to satisfy, how you want to serve. Your contemplation should be that. This is called one-pointed intelligence. This is called Vyavasayatmika Buddhi. Why Chintan Karna? How do I please Krishna? How do I please Krishna? How do I please Krishna? How do you please Krishna? By obeying the instruction of your spiritual master. By, this is the formula. क्योंकि किसी को पता नहीं कैसे satisfy करना है. So simply listen to instruction and simply follow it. बस. That is the formula. Okay? Shraddha चाहिए. That requires unflinching faith in devotional process. Shraddha shabde vishwasa कहे सुदृढ़ निश्चया कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत्या. ये विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कार्य सफल हो जाएंगे. All my endeavors will meet success if we focus on Krishna bhakti seriously. This kind of unflinching faith is required in devotional process. Then one will get one-pointed intelligence. Okay, full flinching faith. If you have this faith, you will chant your rounds very seriously. If you're not chanting your rounds, it means you have no faith. As simple as that. Isn't it? You have no faith that by serving Krishna, I can meet perfection in my life. That faith is not there. That's why I'm not able to increase rounds, I'm not able to chant my rounds. But if I have full faith, then I will do all devotional activities very sincerely. Okay? This is Prabhupada's statement. I'll read this. Listen carefully. Just because of this verse, Prabhupada created this entire ISKCON. Vyavasaya Atmika Buddhi. One-pointed intelligence is required for success. Srila Prabhupada once told his disciples that in the 1950s, before he spread Krishna consciousness throughout the world, he read the commentary on this verse written by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. He said he was struck by the commentary, which further fixed him in his resolve to follow Srila Bhakti Siddhant, who is a spiritual master, Saraswati Thakur's order to preach Krishna consciousness in English. Okay? What does he write, Srila Vishwanath Thakur? Of all kinds of intelligence, the best intelligence is intelligence focused on Bhakti Yoga. In Bhakti Yoga, one's intelligence becomes single-pointed or fixed in determination. One thinks the instructions of my spiritual master to worship the personality of Godhead by chanting, by remembering, by serving his lotus feet, and so on, are only my sadhana. My only sadhana, my only livelihood. I am incapable of giving up these instructions either in the stage of practice or in the stage of perfection. It means I will never leave these instructions. They alone are my object of desire and my only responsibility. Besides them, I can desire no other responsibility, not even my dreams. It is all the same to me whether I feel happy or unhappy, or whether my material existence is eradicated or not. This is called one-point intelligence. Okay? That if you follow the instruction of a spiritual master, like Prabhupada followed. Why did Prabhupada go to US? Why did he go? Anyone? You remember? Why did Prabhupada go to US? Because his guru had instructed him to go there and preach there. So he Prabhuji. made that instruction his life and soul. Right? He prepared to go to US 30, 40 years by writing Bhagavatam, writing Bhagavad Gita, and then he went to US. And after he went to US, he created this mammoth ISKCON organization, which is active in more than 800,
whatever 800 centers across the world in just 50 years. Just 50 years. And the entire world knows who is Krishna, what is Bhagavad Gita, simply because of his efforts. Why? Because he tried to follow the instruction of his Guru. That is a secret formula for success in devotional life. Okay, this was Prabhupada saying, when I read the commentary, I was more resolute in following the instruction of my Guru. Isn't it? Yasya prasadat bhagavad prasado, yasya prasadan nagati kutopi. By satisfaction of spiritual master, the Supreme Personality of Godhead becomes satisfied. If Guru is satisfied, Krishna is satisfied. And by not satisfying the master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. Okay? Make note of this instruction very carefully. This is the formula for success in devotional life. How sincerely we follow the instructions. Okay? Because his instructions are Krishna's instructions, remember, because he is representing Krishna when he is giving instructions. He is representing Krishna. So if we obey Krishna's instructions, Krishna will award us his devotion. If we don't obey, Krishna will not award us. As simple as that. Okay. This is a quotation from my spiritual master, which came today only. I found it very relevant, so I put it here. Okay. Dr. Vishwaspu, पढ़िए इसको जरा. Slowly. We should be serious about our spiritual life and should not lose a minute. A minute lost cannot be bought back. Even with all the riches of the world, follow the principles of our moment and practice them with all enthusiasm. A good devotee is he who follows these principles and at the same time preaches to others. He is full of vigor and is enthusiastic, for he knows that the real valuable thing in life is Krishna consciousness. This is a summary of today's session. Not even a single minute to be wasted, because we cannot buy that minute with the wealth of the entire world. Isn't it? So we have to develop this Vyavasayatmika Buddhi, one-point intelligence, to make progress in our Krishna conscious journey. If not, then our intelligence will be multi-branch. We'll keep running after so many things in life, but finally attain nothing. Attain nothing. Yes, anyone has any question, you can ask. So Mamta Mataji's question was, okay, are we saying if we follow Krishna consciousness, we don't have to follow our family obligations? This is not what is being said. When one reaches a state of pure devotional service, what devotional service? Pure do. Abhi hum maha nahi hai. We're not there. We are just started. We are sadhakas. We are on sadhana bhakti. But when one reaches pure devotional service, then one is not obligated. Then Krishna will take care of everything. Krishna will take all your responsibilities. Okay? Krishna will manage everything. This is what he's been trying to say. According to Bhagavatam, there are 5 debts one is subjected to when he takes birth in this material world. But if he becomes a good, sincere devotee of Krishna, then he is absolved of all those 5 debts. If you remember, we have discussed in the past. Debt against forefathers, debt against, Rishi Munis, debt against other living entities, debt against demigods. But one is free of all that debt if he becomes a good devotee of Krishna. He is not obligated. Okay? Yes, if you have any question, you can ask. So, whatever we discussed today, contemplate on this. Chintan kijiye iske upar, manan kijiye. And, correct your priority in life. Adjust your priorities in life.
before we lose further time. Prabhuji, one more line is there. Please clear that also. Yeah. When one is situated in Krishna consciousness, all the activities are on the absolute plane. For they are no longer subject to dualities like good or bad. Yes. So any material karma, right, has two types of reactions, good or bad, isn't it? Good or bad, two types of reactions. But in Krishna consciousness, one does activity simply to satisfy Krishna, irrespective of whatever result it is. So his happiness lies in executing the duty of serving Krishna, not really worried about what is the result of this. Suppose if I go out to distribute books sincerely, right? I try to touch maybe 50 people, and I'm able to distribute books only to 5 people. That is immaterial, actually. Touching 50 people itself is the source of satisfaction. Krishna is pleased because you touched 50 people. Krishna is not pleased with numbers. He is pleased with the effort. Okay? So then you're out of duality. अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि in devotional life everything is good. Everything is good. There's nothing bad. Okay. Yes. Anyone has any question? Anyone has any question? Yes, Nidhi Mataji. Prabhuji, I couldn't understand this line also. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. What does that? Yeah. So it means when you are serving Krishna, right, then one need not think too much about so-called good activities of this material world, which are more focused on body, like philanthropic activities in this material world, right? If it does not have a touch of Krishna, it is no longer useful. For example, opening hospital, for example. It is only bringing benefit to his body, not to his soul. Right? But one can make opening a hospital also a Krishna conscious activity. In Bombay, we have a hospital called Bhakti Vedanta Hospital. And Dr. Vishwas, please make a note. Whenever you go to Bombay, you should visit this. It is a Bhakti Vedanta hospital in which his body is taken care of and his soul is also taken care of. How? Every patient gets a chance to hear Bhagavad Gita. Every patient gets a chance to eat prasadam. Every patient, there is a moving altar of Jagannath ji, which goes from bed to bed. So the patient can offer flowers, can take arati, can pay obeisances while on the bed. So in his last, maybe some patients may have their last moments, so they're able to remember Krishna during the last moments. This is Krishna consciousness. So if it is without Krishna, then any philanthropic act is no longer useful. One need not worry about them. One need not worry about them. Okay. Any other question? If there is no question, then I'll ask Daya Mataji to summarize. She is very good in summarizing. Yes, Mataji, summarize कीजिए. प्रभु जी. Yes, Mataji. सुनाई दे रही है आवाज? आ रही, हाँ सुनाई दे रही है. अरे मेरे इधर से सब गायब हो गया. हाँ.
मैं इतना ठीक से तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्षमा करें। आज का जो 41 श्लोक, चलिए, व्यावसायिक आदमी का वाला, इसमें आपने आज जो हमें बहुत अच्छे से समझाया है, इतने जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को कहा, बहुत अच्छा लगा। ये असल में इसमें स्थिर बुद्धि की बात कही हुई है कि भौतिक हमारे जीवन में जो भौतिकता रूपी धूल है या भौतिकता रूपी जो विचार हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, तो उनका मार्जन कैसे हो सकता है? तो कृष्ण भावनामृत से, एकाग्रता से उसमें लगे रहने से ही हो सकता है। जिस प्रकार की दर्पण में या जल में स्वच्छ निर्मल होने पर ही हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि भौतिकतावादी रूपी धूल हटाने के लिए हमें कृष्ण का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। जितना हम जाप करेंगे उतनी पारदर्शिता बढ़ती चली जाएगी और हम कृष्ण के उतने नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। हमें कृष्ण का दर्शन, साक्षात्कार उतनी आसानी से हो सकेगा। उसके लिए आवश्यक है कि हमारा मन निर्मल हो, हमारी प्रबल इच्छा होनी चाहिए, उसी से हमें आरंभ करना चाहिए। हमारा दृढ़ विश्वास हो, निष्ठा हो और स्थिरता हो, निर्लेपता और अनासक्ति, ये तमाम चीजें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात हम जब हमारी दृढ़ संकल्प, हमारी बुद्धि को जब हम स्थिर और दृढ़ करना चाहते हैं, तो हमें वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस हमें होने चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य एक ही हो। क्योंकि जो एक लक्ष्य होगा तो जो छोटे मोटे उद्देश्य हैं वे स्वतः ही उसमें समाविष्ट होते चले जाएंगे। कि जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में जल सींचने पर टहनियों, पत्तों, फूलों, उनको स्वतः ही पानी मिल जाता है, उसी प्रकार इस श्लोक के मार्फत कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत से युक्त हम कार्य करें, कृष्ण भक्ति में लगे रहें और उनके आधार पर ही भावना युक्त होकर के अगर हम कार्य करते हैं तो हम अपने आसपास समाज, परिवार और इन सब के लिए स्वतः ही अपने आप ही हमारे कार्य उनके निमित्त भी होते चले जाते हैं। किंतु ये जो कृष्ण भावनामृत वाली स्थिरता लाने के लिए हमें किसी गुरु का आश्रय लेना या गुरु की भक्ति में जाना आवश्यक है, तभी हमें सन्मार्ग और अच्छा मार्गदर्शन या उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। फिर जो कृष्ण भावनामृत में हमारी बुद्धि जो स्थिर रखते हैं, जिनकी होती है, वे अपने उद्देश्य में हमेशा दृढ़ रहते हैं और उनके जीवन का लक्ष्य भी एक ही होता है और उसी में उनके सभी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं होते हैं, तो उनके जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य सब अनिश्चित होते हैं, उनके विचार भी विविध होते हैं और अनिश्चित होते हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो पाते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनके सारे कार्य बिखरे बिखरे और उनकी प्राप्ति भी या उनके परिणाम भी उपयुक्त नहीं होते हैं, उचित नहीं होते हैं। तो और मनुष्य अगर सुख चाहता है, सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भौतिकतावादी प्रकृति को त्याग करना पड़ेगा और कृष्ण भावनामृत में लीन होना पड़ेगा। कि भौतिकता की जो प्रकृति होती है, जो इच्छाएं होती हैं, हम उन इच्छाओं की पूर्ति में लगते हैं और वे जो पूर्ण हो जाती हैं तो पुनः हमारी फिर इच्छा हमारी इंद्रियां उसी और फिर अग्रसर होती है और फिर हमारी इच्छाएं प्रबल होती हैं और फिर प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं और फिर प्राप्ति होती है। ये चक्र चलता रहता है, बूंद वाले पानी। लेकिन समुद्र को इसकी आवश्यकता नहीं होती, तो हमें कृष्ण भावनामृत समुद्र में ही रहना है और कृष्ण भक्ति में बिना किसी चाह के कृष्ण भावना में या कृष्ण भावना से युक्त होकर के कृष्ण की भक्ति में लगे रहना है। ये इसी में हमारी स्थिरता बढ़ती रहेगी। क्योंकि समझदार लोग जो होते हैं भौतिक सुखों में लिप्त नहीं होते हैं, वे भौतिक सुखों में संतोष या आनंद या परम सुख नहीं ढूंढते हैं। वे बुद्धिमान जो होते हैं, ये समझदार लोग जो होते हैं, वे कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने में कृष्ण भावनामृत का आनंद लेते रहते हैं, उसी में अपने सच्चे सुख को प्राप्त करते रहते हैं।
तो ये सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? ये कृष्ण भावनामृत या ये हमारी बुद्धि को कृष्ण भावनामृत में हम कैसे स्थिर कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें साधना की आवश्यकता होती है। साधना द्वारा ही, अभ्यास द्वारा ही हम इसमें लग सकते हैं और हम एकाग्र हो सकते हैं और हमारा जीवन लक्ष्य भी दृढ़ हो सकता है। तो सारे चीजों को, भौतिकतावादी दृष्टिकोण को, विविधता को छोड़ते हुए केवल कृष्ण भावना अमृत में हमें हमारी बुद्धि को स्थिर रखना है, दृढ़ रखना है। हमारे जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए। बाकी सारे उद्देश्य जीवन के वे स्वतः ही उसमें पूर्ण हो जाते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है? फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वेरी सिंसियर, दैट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन पॉइंट इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत एक बात और रह गई थी। हाँ जी, हाँ जी। कि जब हम कृष्ण भावना भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत युक्त होकर के जो भी कार्य करते हैं, वे सारे कार्य स्वभावतः ही स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होते चले जाते हैं और आध्यात्मिक ही होते हैं। तो उसमें अच्छे और बुरे कर्म का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे कृष्ण के निमित्त ही होते हैं। तो उनके सारे परिणाम भी संतोषप्रद ही होते हैं। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू very much everyone for joining today. So we'll see you next week 9:30 a.m. Okay, I'll send 1 or 2 questions for homework. Please try to finish them. Okay, all right. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Thank you.